ராதே ராதே. நம்ம சத்குருநாதருடைய பரம கிருபையினால ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் இப்போ கற்றுன்னு இருக்கோம். 2வது ஸ்கந்தத்தில் 5 அத்தியாயம் வரைக்கும் நம்ம கற்றுன்னு இருக்கோம். 5வது அத்தியாயத்தில் பிரம்மதேவர் நாரதரிடத்தில் எப்படி சிருஷ்டி கிரமத்தை எடுத்து சொல்கிறாருங்கிறத பார்த்தோம். இந்த உலகத்துக்கு காரணமான வஸ்துக்களான மகத்து, அகங்காரம், பஞ்சபூதங்கள், 10 இந்திரியங்கள், அதோட தேவதைகள்லாம் எப்படி தோன்றித்து அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அதுகள்லாம் சேர்ந்து எப்படி இந்த உலகம்ங்கிற அண்டத்தை உருவாக்கினதுங்கிறதையும் பார்த்தோம். அதுலேருந்து எப்படி விராட் புருஷன் தோன்றினார் அப்படிங்கிறத வரைக்கும் 5வது அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம். இந்த 6வது அத்தியாயத்தில் பிரம்மதேவர் மேலே இந்த விராட் புருஷனுடைய விபூதிகளெல்லாம் எடுத்து சொல்கிறார். இந்த அத்தியாயமானது வேதத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிரசித்தமான மந்திரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த புருஷ சூக்தத்தினுடைய ஒரு அர்த்தமாக அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு மகான்கள்லாம் வியாக்கியானத்தில் நம்மளுக்கு எடுத்து சொல்கிறா. அப்போ இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே முதல்ல சில ஸ்லோகங்களில் பிரம்மதேவர் எப்படி இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே இந்த விராட் புருஷனுடைய அங்கங்களாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் சொல்லி ஆரம்பிக்கிறார். ஏற்கனவேயே முதல் அத்தியாயத்தில் எப்படி சுகர் சொன்னாரோ அது போலவே தான் இருந்தாலும் இதில் பல புது விஷயங்களை சொல்கிறதுனால நம்ம இதையும் அனுபவிக்கலாம். முதல்ல சொல்கிற அந்த பகவானுடைய முகமானது வாக்குக்கும் அக்னிக்கும் ஸ்தானமாக இருக்குது அப்படிங்கிறார். அவருடைய 7 தாத்துக்கள், அதாவது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ரத்தம், மாம்சம் அதெல்லாம் சொல்கிறோமே, அந்த மாதிரி 7 தாத்துக்களானது வேதத்தில் உபயோகப்பட்டு இருக்கக்கூடிய 7 சந்தஸ்கள், அதாவது காயத்ரி போன்ற சந்தஸ்களாக ஸ்தானமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார். அவருடைய நாக்கானது 3 விதமான அன்னத்துக்கு ஸ்தானமாக இருக்குது. ஹவ்யம், கவ்யம், அமிர்தம் அப்படிங்கிறார். இப்போ ஹவ்யம்ங்கிறது தேவர்களுடைய அன்னம், கவ்யம் அப்படிங்கிறது பித்ருக்களுடைய அன்னம், அமிர்தம் அப்படிங்கிறது இது ரெண்டுத்தினுடையவும் மீதம், அதாவது சேஷம்னு சொல்கிறோமே, அதுதான் மனுஷர்களுடைய அன்னமாம், அது அமிர்தம் போன்றது அப்படின்னு சொல்கிறார். அது அடுத்ததாக பகவானுடைய மூக்கானது அஸ்வினி குமாரர்களுக்கும் பலவிதமான வாசனைகளுக்கும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஓஷதிகளுக்கும் ஸ்தானமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார். அவருடைய கண்கள் ஆகாசத்திற்கும் சூரியனுக்கும் ஸ்தானமாக இருக்குது. காதுகள்லாம் எல்லா திக்குகளுக்கும் எல்லா தீர்த்தங்களுக்கும் ஸ்தானமாக இருக்குது அப்படிங்கிறார். அவருடைய சரீரமானது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வஸ்துக்களுடையும் சாரமாகவும் எல்லா அழகுக்கும் இருப்பிடமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார். பகவானுடைய தோலானது ஸ்பர்ஷம், வாயு மற்றும் யாகங்களுக்கெல்லாம் ஸ்தானமாக இருக்குது. அவனுடைய ரோமங்கள்லாம் விருட்சங்களுக்கு ஸ்தானமாக இருக்குது. அவனுடைய கேசங்கள்லாம் மேகங்களாக இருக்குது. அவனுடைய மீசையும் தாடியும் மின்னலுக்கு ஸ்தானமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார். அவருடைய கால் கையில் இருக்கக்கூடிய நகங்கள்லாம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பாறைகளுக்கும் இரும்புங்கிற அந்த லோகத்துக்கும் ஸ்தானமாக இருக்குது அப்படிங்கிறார். அவருடைய புஜங்கள்லாம் லோகபாலர்கள், அதாவது உலகத்தை காப்பாற்றக்கூடியவர்களுக்கு ஸ்தானமாக இருக்குது. அவருடைய கால் நடையானது பூஹு, புவஹா, சுவஹான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த 3 லோகங்களுக்கு ஸ்தானமாக இருக்குது. அவர் பகவானுடைய சரணமானது க்ஷேமம், சரணம், அது ரெண்டுத்துக்கும் ஸ்தானமாக இருக்குது அப்படிங்கிறார். க்ஷேமம்னா என்ன அப்படின்னா, நம்மளுக்கு எல்லா விதமான எதெல்லாம் நம்ம அடைஞ்சிருக்கோமோ அதெல்லாம் காப்பாற்றுறதுங்கிறது க்ஷேமம். சரணம் அப்படிங்கிறது பயத்திலேருந்து காப்பாற்றக்கூடியதுங்கிறது சரணம். அது ரெண்டுத்துக்கும் ஸ்தானமாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம என்னெல்லாம் ஆசைப்படுறோமோ அது எல்லாத்தையும் கேட்டு பெறறதுக்கும் ஒரு ஸ்தானமாக இருக்குது பகவானுடைய சரணம் அப்படின்னு சொல்கிறார். பகவானுடைய முதுகானது தோல்வி, அதர்மம், அஜ்ஞானம் இதற்கெல்லாம் ஸ்தானமாக இருக்குது. அவருடைய நாடிகள்லாம் எல்லா நதிகளுக்கும் ஓடைகளுக்கும் ஸ்தானமாக இருக்குது. பகவானோட வயிறானது எல்லா சமுத்திரங்களுக்கும் அவ்யக்தம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிரதானத்துக்கும் ஸ்தானமாக இருக்குது. அதுக்கு மேலே ரொம்ப அழகாக பிரம்மதேவர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, இந்த விராட் புருஷனுடைய விபூதிகள்லாம் எடுத்து சொல்லிகிட்டே வரார். அவர் சொல்கிறார், நாரதா, நானோ நீயோ அல்லது சனத்குமாரர்களோ அல்லது எல்லா ரிஷிகளோ அல்லது தேவர்களோ கந்தர்வர்களோ அப்சரசுகளோ மிருகங்களோ பசுகளோ பட்சிகளோ அல்லது இந்த பூமியிலையோ அல்லது தண்ணீர்லையோ ஆகாயத்திலையோ வாழக்கூடிய எல்லா விதமான ஜீவராசிகளோ அல்லது பூதம், பவ்யம், பவத்துன்னு சொல்லக்கூடிய முன்னாடி வாழ்ந்தவைகள், இப்போ வாழக்கூடியவைகள், இனி வரப்போகிற ஜீவன்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே சர்வம் புருஷ ஏவேதம் அப்படின்னு சொல்கிறார். எல்லாமே அந்த பகவானுடைய ஸ்வரூபம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதுக்கப்புறமா சொல்கிறார், தேனேதம் ஆவிருத்தம் விஸ்வம் விதஸ்திம் அதிதிஷ்டதி அப்படிங்கிறார். இந்த பகவான் இருக்காரே, இந்த உலகத்தில் எல்லாத்தையும் வியாபிச்சு இருக்கார். ஆனால் அந்த உலகமானது அவருடைய ஒரு சின்ன அம்சம்தான். அதையும் தாண்டி பகவான் ரொம்ப பெரியவராகவும் அளவே இட முடியாதவராகவும் இருக்கார் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார். எப்படி சூரிய பகவான் தன்னையும் பிரகாசப்படுத்தின்னு இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வஸ்துக்களையும் பிரகாசப்படுத்துகிறாரோ, அது மாதிரி இந்த விராட் பகவான் இருக்காரே, அவர் தானும் சொப்பிரகாசமாக இருந்துட்டு இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வஸ்துக்களையும் உள்ளையும் வெளியிலையும் அவர் தான் பிரகாசப்படுத்துகிறார் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதுக்கப்புறமா சொல்கிறார், சோ அமிர்தஸ்ய அபயஸ்ய ஈஷா அப்படிங்கிறார். அதாவது மரணத்தை கொடுக்கக்கூடிய அந்த கர்ம பலன்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் தாண்டி அந்த அமிர்தம் அப்படிங்கிற மரணம் இல்லாத ஒரு தன்மையும் அபயம்னு சொல்லக்கூடிய பயமற்ற தன்மையும் அருளக்கூடியவர் அவர்தான் அப்படின்னு சொல்கிறார்.
எப்படி ஒரு ஸ்லோகங்களுக்கு 4 பாதம் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, 4 பாகமாக அதை பிரிக்கிறோம். அது மாதிரி இந்த பகவானுடைய 4 பாதங்கள் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா, 4 பாகம்னு எடுத்துட்டோம்னா அதில் ஒரு பாதம் தான் இந்த மனுஷர்கள் வாழக்கூடிய இந்த பூமி. மற்ற 3 பாகங்களும் என்ன அப்படின்னா மேல் உலகங்களாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார். ஜனஹா தபஹா சத்தியம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மேல் உலகங்களாக இருக்குது. அந்த லோகங்களில் தான் பகவான் அமிர்தம் க்ஷேமம் அபயம் இதை 3த்தையும் அங்கே தான் நிலைநாட்டியிருக்கான் அப்படிங்கிறத எடுத்து சொல்கிறார். அதுக்கப்புறமா 2 விதமான மார்க்கங்களை பற்றி பேசுகிறார் பிரம்மதேவர். சாசனா நசனே உபே அப்படின்னு சொல்கிறார். அதாவது சாசனம் அனசனம் அப்படின்னு 2 மார்க்கத்தை பற்றி சொல்கிறார். அசனம் அப்படின்னாலே சாப்பிட்றது அப்படின்னு அர்த்தம், அதாவது அனுபவிக்கிறது அப்படின்னு இங்கே அர்த்தம். இப்போ சாசனம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய போகங்களெல்லாம் அனுபவிக்கக்கூடிய கர்ம மார்க்கம், அது அவித்யை ஆசிரியிச்ச ஒரு மார்க்கம். அடுத்ததான் அனசனம் அப்படிங்கிறது இந்த லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய போகங்கள்லாம் வேண்டாம்னு தள்ளி மோட்ச மார்க்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உபாசனா மார்க்கம் இருக்கு இல்லையா, அது வித்யை ஆசிரியிச்சது. இந்த 2 மார்க்கத்தை ஜனங்கள் எதுக்கு அதிகாரிகளோ அதை அவவா பின்பற்றறா அப்படின்னு சொல்லி, ஆனால் பகவான் 2த்துக்குமே பொதுவாக இருக்கான். அது 2த்தினுடைய பலனையும் கொடுக்கக்கூடியவன் அவன்தான் அப்படின்னு சொல்கிறார். அந்த விராட் புருஷன் இந்த உலகத்திலேருந்து தான் தோன்றினார் அப்படின்ன போதிலும் அவர் சொல்கிறார், இந்த உலகத்தை காட்டிலும் எல்லா வஸ்துக்களை காட்டிலும் அவர் ரொம்பவும் வித்தியாசமாக இருக்கார், இந்த உலகத்தில் ஒட்டாதவராக இருக்கார் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். சொல்லிட்டு இப்போ பிரம்மதேவர் தன்னை பற்றியும் எடுத்து சொல்லிக்கிறாராம் நாரதர் இடத்துல. ஏன்னா நாரதர் உங்களை பற்றியும் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் இல்லையா, அதனால இப்போ சொல்கிறார் அந்த விராட் புருஷனுடைய நாபி கமலத்திலேருந்து தான் நான் தோன்றினேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்படி நான் தோன்றின உடனேயே அந்த பகவானை யாகத்தினால ஆராதனை பண்ணணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன். அப்போ நான் எல்லா இடத்துலையும் தேடினா அந்த யாகத்துக்கு வேண்டுங்கிற பொருட்களெல்லாம் நான் தேடும்பொழுது எங்கே பார்த்தாலும் பகவானுடைய ஒரு அங்கங்களை தவிர எனக்கு எதுவுமே கண்ணுக்கு தெரியல அப்படிங்கிறார். ஏன் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் எல்லாமே அவனுடைய அங்கங்கள் தான் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. அதனால என்ன பண்ணார் பிரம்மதேவர் அப்படின்னா பகவானுடைய பலவிதமான அங்கங்கள்லேருந்தே அந்த யாகத்துக்கு வேணுங்கிற பொருட்களெல்லாம் சேகரித்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். யக்ஞ பூமியோ அல்லது அந்த மரங்களோ தர்ப புல்லோ அல்லது நெய்யோ அல்லது சோமம்ங்கிற அந்த லத்தையோ வேத மந்திரங்களோ சமித்தோ ஹவிஸோ எல்லாமே அந்த பகவானோட சரீரத்திலேருந்தே நான் எடுத்துட்டு அந்த பகவானையே நான் யஜ்ஞத்தினால ஆராதனை பண்ணேன் அப்படிங்கிறார். என்னை தொடர்ந்து உன்னுடைய அண்ணாக்களான அந்த 9 பிரஜாபதிகள் மனுக்கள் அதுக்கப்புறமா தேவர்கள் மனுஷர்கள் எல்லாருமே அந்த பகவானை யாகங்கள்னால ஆராதனை பண்ணா அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய ஒரு கட்டளையினால தான் நான் இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணுறேன், அவருடைய ஒரு கட்டளையினால தான் ருத்ரனும் இந்த உலகத்தை சம்ஹாரம் பண்ணுறார், அவரே தானே இந்த உலகத்தை காப்பாத்துறார் அப்படின்னு சொல்லி அதனால பகவானுக்கு திரிசக்தி திருக் அப்படின்னு ஒரு பேர் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதாவது 3 விதமான சக்திகளையும் தரிக்கக்கூடியவர், சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் அப்படிங்கிற இந்த 3 ஸ்வரூபங்களில் அவர் தரிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி, நீ கேட்டதை போலவே நான் உனக்கு எல்லாம் எடுத்து சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லி இப்போது யாரால தனக்கு இத்தகைய ஒரு மேன்மை ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத நாரதர் இடத்துல சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறார். அதை ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகத்தில் பிரம்மா தெரிவிக்கிறார். பிரம்மதேவரால் தான் இவ்வளோ அழகாக சொல்ல முடியும். அவர் சொல்கிறார், ந பாரதி மேங்க மிருஷோபலக்ஷதே அப்படிங்கிற, என்னோட வாக்கானது ஒரு காலும் பொய் போகவே போகாது, நவை கொச்சின்மே மனசோ மிருஷாகதிஹி அப்படிங்கிறார். நான் மனசில் எது நினைக்கிறேனோ அது ஒரு காலும் பொய்யாகவே ஆகாது. நமே ரிஷிகாணி பதந்தி அசத் பதே, என்னுடைய இந்திரியங்கள்லாம் ஒரு காலும் தப்பான வழியில் போகவே போகாது அப்படிங்கிறார். ஏன் அப்படின்னா என்மே ஹிருதோத்கண்டியவதா திருதோ ஹரிஹி அப்படின்னு நான் எப்பொழுதும் என்னோட ஹிருதயத்தில் அந்த பகவான் ஹரிய பக்தியோடு நான் நினச்சிட்டே இருக்கிறதுனால எனக்கு இத்தகைய ஒரு பெருமை இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லி, நான் வேதமயமாக இருக்கேன், நான் தப்போமயமாக இருக்கேன், எல்லா பிரஜாபதிகளும் என்னை நமஸ்காரம் பண்ணுறா, அப்படிலாம் இருந்த போதிலும் கூட நான் எந்த பகவானிடத்துலேருந்து தோன்றினேனோ அவரை என்னால் முழுசாக புரிஞ்சுக்கவே முடியல அப்படின்னு சொல்கிறார். ஆனால் என்னால் மட்டும் இல்லை, ஒன்னாலையும் சரி அல்லது ருத்ரனோ அல்லது தேவர்களோ நம்ம எல்லாரும் அந்த பகவானோட மகிமைகளே தான் எப்பொழுதும் பாடிண்டே இருந்த போதிலும் யாராலையுமே அவரை முழுமையாக அவரை புரிஞ்சுக்க முடியல. இதில் ஒன்றும் பெரிய ஆச்சரியம் இல்லை. ஏன் அப்படின்னா பகவானுக்கே தன்னுடைய குணங்களுடைய எல்லை என்னங்கிறது தெரியாது அப்படிங்கிற, அதுக்கு ரொம்ப அழகாக ஒரு உதாரணம் சொல்கிறார். யதா நபஹா ஸ்வாந்தம் அப்படிங்கிற, எப்படி ஆகாசத்துக்கு தன்னுடைய எல்லை என்னன்னு தெரியாதோ அது மாதிரி பகவானுக்கே தன்னுடைய மகிமைகளோட எல்லை என்னன்னு தெரியாது. அதா பரே குதஹா, அப்போ மற்றவாளை பற்றி கேட்கணுமா அப்படின்னு சொல்கிறார். அதனால என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால அப்படின்னா அந்த பகவானை நமஸ்கரிக்க தான் முடியும் அப்படிங்கிறதுனால தஸ்மை பகவதே நமஹா அப்படிங்கிறார். ஏன் அப்படின்னா அந்த பகவான் என்ன பண்ணுறாருனா தன்னை சரணடைஞ்சவர்களுடைய சம்சாரத்தை போக்கி எல்லா மங்களத்தையும் கொடுக்கக்கூடியவர், அதனால அவருக்கு நமஸ்காரம் தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்புறமா ரொம்ப அழகாக ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்தில் இந்த பகவான் பிரம்மஸ்வரூபம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரே ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார். விசுத்தம் கேவலம் ஞானம் பிரத்யக் சம்யக் அவஸ்திதம்
சத்தியம் பூர்ணம் அநாத்யந்தம் நிர்குணம் நித்தியம் அத்வயம் அப்படிங்கிறார். ஞானஸ்வரூபியாக இருக்கான் பகவான், எல்லாருக்குள்ளேயும் அந்தர்யாமியாக திரஷ்டாவாக இருக்கான், சத்திய வஸ்துவாக இருக்கான், பூர்ண வஸ்துவாக இருக்கான், ஆதியும் அந்தமும் இல்லாதவனாக இருக்கான், நித்தியமான வஸ்துவாக இருக்கான், இரண்டற்றவனாக இருக்கான் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக சொல்லி, யார் அவனை ஹிருதயத்தில் யாரால் உணர முடியும் அப்படின்னா மனசை அடக்கி அப்படி பிரசாந்தமாக இருக்கக்கூடியவர்களால் தான் அவனை உணர முடியும். யார் தங்களோட ஹிருதயத்தில் அவனை தர்க்கத்து மூலமாக அவனை ஆராய்ஞ்சு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாளோ அவர்களோட ஹிருதயத்திலேருந்து உடனே அவன் மறைஞ்சு போயிடுறான் அப்படின்னு சொல்கிறார். இப்போ முடிக்கும் பொழுது நாரதர் இடத்துல சொல்கிறார் பிரம்மதேவர், இந்த உலகத்தில் எல்லாமே பகவானுடைய ஸ்வரூபம் அப்படின்னு நான் உனக்கு சொன்னேன், இருந்த போதிலும் எங்கெல்லாம் ஒரு விசேஷம் இருக்கோ அதெல்லாம் பகவானுடைய ஒரு விபூதிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறார். பகவத் அப்படிங்கிறார், அதாவது எங்கெல்லாம் பகம் அப்படிங்கிற அந்த ஐஸ்வர்யம் இருக்கோ, மகஸ்வத் எங்கெல்லாம் மேன்மை இருக்கோ, ஓஜஹா சஹஸ்வத் பலவத் எங்கெல்லாம் ஷரீர பலமோ அல்லது மனோபலமோ அல்லது இந்திரியங்களுடைய பலமோ விசேஷமாக இருக்கோ, க்ஷமாவத் எங்கெல்லாம் பொறுமை இருக்கோ, ஹ்ரீ ஸ்ரீ விபூதி அப்படிங்கிறார். ஸ்ரீ அப்படிங்கிற ஐஸ்வர்யம், ஹ்ரீ அப்படின்னா தப்பு காரியம் பண்ணுறதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு வெட்கம், விபூதி அப்படிங்கிற பாக்கியங்கள், ஆத்மவத்து எங்கெல்லாம் புத்திசாலித்தனம் இருக்கோ, அத்புதாரணம் எங்கெல்லாம் ரொம்ப அழகான ஒரு ஆச்சரியமான ரூபம் இருக்கோ, இது எல்லாமே பகவானுடைய ஒரு விபூதி தான் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் இருந்த போதிலும் வேதங்களும் எல்லா ஞானிகளும் பகவானுடைய எத்தகைய அவதாரங்களை எப்பொழுதும் பாடுறா அப்படின்னா சத்வாவதாரங்கள்னு சொல்லக்கூடிய சத்வகுணத்தினால பகவான் இந்த லோகத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக பலவிதமான அவதாரங்கள் பண்ணுறானே, அந்த அவதாரங்களை தான் எப்பொழுதும் வேதங்களும் ஞானிகளும் எடுத்து பாடுறா அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பிரம்மதேவர் ஆசைப்படுறார். அந்த அவதாரங்களெல்லாம் எடுத்து விஸ்தாரமாக நாரதருக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறார். அதனால சொல்கிறார் கர்ண கஷாய சோஷான் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதாவது நாரதா, இந்த கதைகள்லாம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா நம்ம காதில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் நிறைய சேர்ந்துருக்காம், கெட்ட விஷயங்களெல்லாம் கேட்டு அந்த அழுக்குகளெல்லாம் வத்தடிக்கக்கூடியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார். சுபேஷான் அப்படிங்கிற ரொம்ப ரொம்ப அழகான கதைகள், ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய அத்தகைய கதைகள், அதை நான் உனக்கு எடுத்து சொல்கிறேன். ஆப்பிய தாம் அப்படிங்கிற நீ காதுகளால் அந்த கதைகளெல்லாம் நீ குடி அப்படின்னு சொல்லி இப்போ வரக்கூடிய அந்த 7வது அத்தியாயத்தில் ரொம்ப அழகாக ஒரு ஸ்லோகத்துலேயும் விஸ்தாரமாக ஒரு அவதாரத்தோட கதையும் எடுத்து சொல்ல போகிறார் பிரம்மதேவர். எப்படி முதல் ஸ்கந்தத்துடைய 3வது அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்த்தோம், அந்த அவதாரங்களெல்லாம் அப்படியே பேரளவில் சொல்லிகிட்டே வந்தார் இல்லையா. இப்போது இந்த அடுத்த அத்தியாயத்தில் பிரம்மதேவர் விஸ்தாரமாக ஒரு ஸ்லோகத்தையும் ஒரு கதையை சொல்ல போகிறார். இப்போது நம்ம இந்த 6வது அத்தியாயத்தை நம்ம எப்பொழுதும் போல நம்ம கற்றுக்கலாம். ராதே ராதே. गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कलये सुन्दराकारं सदैकप्रियदर्शनम्, अज्ञाननाशकं देवं सद्गुरुं मुरलीधरं, मुरलीमण्डितकरकमलं मुनिजनमोहनं, व्यत्यस्तपादं वनमालाधारिणं, प्रेमभक्तमण्डलनित्यकीर्तितं श्रीप्रेमिकवरदम् आश्रयेऽहं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं, श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः, यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातराजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम्, अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोऽन्धं, संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं, तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां,
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। अथ षष्ठोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच ब्रह्मोवाच वाचां वह्नेर्मुखं क्षेत्रं वाचां वह्नेर्मुखं क्षेत्रं वाचां वह्नेर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः छन्दसां सप्तधातवः छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां 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 हव्यकव्य अमृत अन्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च जिह्वा सर्वरसस्य च जिह्वा सर्वरसस्य च सर्वासूनां च वायोश्च सर्वासूनां च वायोश्च सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायने तन्नासे परमायने तन्नासे परमायने अश्विनोः ओषधीनां च अश्विनोरोषधीनां च अश्विनोरोषधीनां च घ्राणो मोदप्रमोदयोः घ्राणो मोदप्रमोदयोः घ्राणो मोदप्रमोदयोः रूपाणां तेजसां चक्षुः रूपाणां तेजसां चक्षुः रूपाणां तेजसां चक्षुः दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णौ दिशां च तीर्थानां कर्णौ दिशां च तीर्थानां कर्णौ दिशां च तीर्थानां श्रोत्रम् आकाशशब्दयोः श्रोत्रम् आकाशशब्दयोः श्रोत्रम् आकाशशब्दयोः तद्गात्रं वस्तुसाराणां तद्गात्रं वस्तुसाराणां तद्गात्रं वस्तुसाराणां सौभगस्य च भाजनं सौभगस्य च भाजनं सौभगस्य च भाजनं त्वग् अस्य स्पर्शवायोश्च त्वगस्य स्पर्शवायोश्च त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि सर्वमेधस्य चैव हि सर्वमेधस्य चैव हि रोमाणि उद्भिज्य जातीनां रोमाण्युद्भिज्जजातीनां रोमाण्युद्भिज्जजातीनां यैर्वा यज्ञस्तु संभृतः यैर्वा यज्ञस्तु संभृतः यैर्वा यज्ञस्तु संभृतः केशश्मश्रुनखानि अस्य केशश्मश्रुनखान्यस्य केशश्मश्रुनखान्यस्य शिलालोहाभ्रविद्युतां 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 बाहवो लोकपालानां बाहवो लोकपालानां बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणां प्रायशः क्षेमकर्मणां प्रायशः क्षेमकर्मणां विक्रमो भूर्भुवस्वश्च विक्रमो भूर्भुवस्वश्च विक्रमो भूर्भुवस्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च क्षेमस्य शरणस्य च
क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि सर्वकामवरस्यापि हरेः चरण आस्पदम् हरेश्चरण आस्पदम् अपां वीर्यस्य सर्गस्य अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पर्जन्यस्य पुंसः शिश्न उपस्थस्तु पुंसः शिश्न उपस्थस्तु प्रजात्यानन्दनिर्वृतेः प्रजात्यानन्दनिर्वृतेः पायुः यमस्य मित्रस्य पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निर्वृतेः मृत्योः हिंसाया निर्वृतेर्मृत्योः निरयस्य गुदस्मृतः पराभूतेः अधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदनदीनां तु गोत्राणाम् अस्ति संहतिः अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम् धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् अहं भवान् भवश्चैव तयि मे मुनयो ग्रजाः सुरासुरनरा नागाः खगा मृगसरीसृपाः गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो भूतगणोरगाः पशवः पितरः सिद्धा विद्याध्राः चारणाद्रुमाः अन्ये च विविधा जीवा
अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकसः 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 ग्रहर्क्षकेतवः ताराः ग्रहर्क्षकेतवस्ताराः ग्रहर्क्षकेतवस्ताराः तडितः स्तनयित्नवः तडितः स्तनयित्नवः तडितः स्तनयित्नवः सर्वं पुरुष ये वेदं सर्वं पुरुषये वेदं सर्वं पुरुषये वेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् भूतं भव्यं भवच्च यत् भूतं भव्यं भवच्च यत् तेनेदम् आवृतं विश्वं तेनेदम् आवृतं विश्वं तेनेदम् आवृतं विश्वं वितस्तिम् अधितिष्ठति वितस्तिम् अधितिष्ठति वितस्तिम् अधितिष्ठति स्वधिष्ण्यं प्रतपन् प्राणो स्वधिष्ण्यं प्रतपन् प्राणो स्वधिष्ण्यं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ बहिश्च प्रतपत्यसौ बहिश्च प्रतपत्यसौ प्रतपति असौ एवं विराजं प्रतपन् एवं विराजं प्रतपन् एवं विराजं प्रतपन् तपति अन्तर्बहिः पुमान् तपत्यन्तर्बहिः पुमान् तपत्यन्तर्बहिः पुमान् सो अमृतस्य अभयस्य ईशो सोमृतस्याभयस्येषो सोमृतस्याभयस्येषो मर्त्यम् अन्नं यदत्यगात् मर्त्यम् अन्नं यदत्यगात् मर्त्यमन्नं यदत्यगात् महिमैष ततो ब्रह्मन् महिमैष ततो ब्रह्मन् महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः पुरुषस्य दुरत्ययः पुरुषस्य दुरत्ययः पादेषु सर्वभूतानि पादेषु सर्वभूतानि पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः पुंसः स्थितिपदो विदुः पुंसस्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेमम् अभयम् अमृतं क्षेमम् अभयम् अमृतं क्षेममभयम् त्रिमूर्ध्नो अधायि मूर्धसु त्रिमूर्ध्नो धायि मूर्धसु त्रिमूर्ध्नो धायि मूर्धसु पादास्त्रयो बहिश्चासन् पादास्त्रयो बहिश्चासन् पादास्त्रयो बहिश्चासन् अप्रजानां य आश्रमाः अप्रजानां य आश्रमाः अप्रजानां य आश्रमाः अन्तस्त्रिलोक्यास्त्वपरो 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 गृहमेधो अबृहद्व्रतः गृहमेधो बृहद्व्रतः गृहमेधो बृहद्व्रतः श्रुतिविचक्रमे विश्वं श्रुतिविचक्रमे विश्वं श्रुतिविचक्रमे विश्वं शासनानशने उभे शासनानशने उभे शासनानशने उभे यद् अविद्या च विद्या च यदविद्या च विद्या च यदविद्या च विद्या च पुरुषस्तु उभयाश्रयः पुरुषस्तु भयाश्रयः पुरुषस्तु भयाश्रयः यस्माद् अण्डं विराड्जज्ञे यस्मादण्डं विराड्जज्ञे यस्मादण्डं विराड्जज्ञे भूतेन्द्रियगुणात्मकः 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 तद्द्रव्यम् अत्यगाद् विश्वम् तद्द्रव्यम् अत्यगाद्विश्वं तद्द्रव्यम् अत्यगाद्विश्वं गोभिः सूर्य इवातपन् गोभिः सूर्य इवातपन्
गोभिः सूर्य इवातपन् இந்த 21 ஸ்லோகங்கள் அதாவது 21 ஸ்லோகாஸ் நம்ம சேர்ந்து படிக்கலாம். பிரம்மோவாச்ச வாசாம் வந்தேர்முகம் க்ஷேத்ரம் छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायने अश्विनोरोषधीनां च घ्राणो मोदप्रमोदयोः रूपाणां तेजसां चक्षुः दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णौ दिशां च तीर्थानां श्रोत्रम् आकाशशब्दयोः तद्गात्रं वस्तुसाराणां सौभगस्य च भाजनं त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्ववेधस्य चैव हि रोमाण्युद्भिज्य जातीनां यैर्वा यज्ञस्तु संवृतः केशश्मश्रु नखान्यस्य शिलालोहाब्रविद्युतां बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणां विक्रमो भूर्भुवस्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम् अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पुंसः शिष्ण उपस्थस्तु प्रजात्यानन्दनिर्वृतेः पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निर्वृते मृत्योः निरयस्य गुदस्मृतः पराभूतेरधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदनदीनां तु गोत्राणाम् अस्ति संहतिः अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम् धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् अहं भवान् भवश्चैव तयिमे मुनयोऽग्रजाः सुरासुरनरा नागाः खगा मृगसरीसृपाः गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो भूतगणोरगाः पशवः पितरः सिद्धा विद्याध्राश्चारणाद्रुमाः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकसः ग्रहर्क्षकेतवस्ताराः तडितः स्तनयित्नवः सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् तेनेदम् आवृतं विश्वं वितस्तिम् अधितिष्ठति स्वधिष्ण्यं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपन् तपत्यन्तर्बहिः पुमान् सोमृतस्याभयस्येषो मर्त्यम् अन्नं यदत्यगात् महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेमम् अभयं त्रिमूर्ध्नोधायि मूर्धसु पादास्त्रयो बहिश्चासन् अप्रजानां य आश्रमाः अन्तस्त्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधो बृहद्व्रतः श्रुतिविचक्रमे विश्वं शासनानशने उभे यदविद्या च विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः यस्मादण्डं विराट्जज्ञे भूतेन्द्रियगुणात्मकः तद्द्रव्यम् अत्यगाद्विश्वं
गोभिः सूर्य इवातपन् यदास्य नाभ्यान्नडिनात् यदास्य नाभ्यान्नडिनात् यदास्य नाभ्यान्नडिनात् अहम् आसं महात्मनः अहमासं महात्मनः अहम् आसं महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान् नाविदं यज्ञसंभारान् नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुषावयवादृते 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 पुरुष अवयवात् ऋते तेषु यज्ञस्य पशवः तेषु यज्ञस्य पशवः तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशाः सवनस्पतयः कुशाः सवनस्पतयः कुशाः इदं च देवयजनम् इदं च देवयजनम् इदं च देवयजनम् कालश्च उरुगुणान्वितः कालश्चोरुगुणान्वितः कालश्चोरुगुणान्वितः वस्तूनि ओषधयस्नेहा वस्तून्योषधयः स्नेहा वस्तून्योषधयः स्नेहा रसलोहमृदो जलम् रसलोहमृदो जलम् रसलोहमृदो जलम् ऋचो यजूंषि सामानि ऋचो यजूंषि सामानि ऋचो यजूंषि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तम चातुर्होत्रं च सत्तम चातुर्होत्रं च सत्तम नामधेयानि मन्त्राश्च नामधेयानि मन्त्राश्च नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च दक्षिणाश्च व्रतानि च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः देवतानुक्रमः कल्पः देवतानुक्रमः कल्पः सङ्कल्पः तन्त्रमेव च सङ्कल्पस्तन्त्रमेव च सङ्कल्पस्तन्त्रमेव च गतयो मतयः श्रद्धा गतयो मतयः श्रद्धा गतयो मतयः श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणम् प्रायश्चित्तं समर्पणम् प्रायश्चित्तं समर्पणम् पुरुषावयवैः एते पुरुषावयवैरेते पुरुषावयवैरेते सम्भाराः सम्भृता मया सम्भाराः सम्भृता मया सम्भाराः सम्भृता मया इति सम्भृतसम्भारः इति सम्भृतसम्भारः इति सम्भृतसम्भारः पुरुषावयवैः अहम् पुरुषावयवैरहम् पुरुषावयवैरहम् तमेव पुरुषं यज्ञं तमेव पुरुषं यज्ञम् तमेव पुरुषं यज्ञम् तेनैव अयजम् ईश्वरम् तेनैवायजम् ईश्वरम् तेनैवायजम् ईश्वरम् ततस्ते भ्रातर इमे ततस्ते भ्रातर इमे ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव प्रजानां पतयो नव प्रजानां पतयो नव अयजन् व्यक्तम् अव्यक्तम् अयजन् व्यक्तमव्यक्तम् अयजन् व्यक्तमव्यक्तम् पुरुषं सुसमाहिताः पुरुषं सुसमाहिताः पुरुषं सुसमाहिताः ततश्च मनवः काले ततश्च मनवः काले ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे ईजिरे ऋषयो परे ईजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या पितरो विबुधा दैत्या पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिः विभुम् मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम् मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम् नारायणे भगवती नारायणे भगवती
नारायणे भगवति तदिदं विश्वम् आहितं तदिदं विश्वमाहितं तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायोरुगुणः 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 सर्गादौ अगुणस्वतः सर्गादौ अगुणस्वतः सर्गादौ अगुणस्वतः सृजामि तन्नियुक्तोऽहम् सृजामि तन्नियुक्तोऽहं सृजामि तन्नियुक्तोऽहम् हरो हरति तद्वशः हरो हरति तद्वशः हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण विश्वं पुरुषरूपेण विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् परिपाति त्रिशक्तिधृक् परिपाति त्रिशक्तिधृक् इति ते अभिहितं तात इति ते भिहितं तात इति ते अभिहितं तात यथेदम् अनुपृच्छसि यथेदम् अनुपृच्छसि यथेदम् अनुपृच्छसि नान्यद् भगवतः किञ्चित् नान्यद्भगवतः किञ्चित् नान्यद्भगवतः किञ्चित् भाव्यं सदसदात्मकम् भाव्यं सदसदात्मकम् भाव्यं सदसदात्मकम् न भारतीमेङ्गमृषोपलक्ष्यते न भारतीमेङ्गमृषोपलक्ष्यते न भारतीमेङ्गमृषोपलक्ष्यते मृषा उपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे हृषीकाणि पतन्ति असत्पथे न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथे न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्मे हृदा औत्कण्ठ्यवथा धृतो हरिः यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः सोऽहं समाम्नायमयः तपोमयः सोऽहं समाम्नायमयस्तपोमयः सोऽहं समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनाम् अभिवन्दितः पतिः प्रजापतीनाम् अभिवन्दितः पतिः प्रजापतीनाम् अभिवन्दितः पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहितः आस्थाय योगं निपुणं समाहितः आस्थाय योगं निपुणं समाहितः तं नाध्यगच्छं यत आत्मसम्भवः तं नाद्यगच्छं यत आत्मसम्भवः तं नाद्यगच्छं यत आत्मसम्भवः नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषाम् नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषाम् नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषाम् भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलम् भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलम् भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलम् यो हि आत्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यो ह्यात्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यो ह्यात्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्तम् अथा परे कुतः यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुः नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुः नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुः न वामदेवः किम् उतापरे सुराः न वामदेवः किमुता परे सुराः
न वामदेवः किमुता परे सुराः तन्मायया मोहितबुद्धयः त्विदम् तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदम् तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदम् विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे यस्यावतारकर्माणि यस्यावतारकर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः गायन्ति ह्यस्मदादयः गायन्ति ह्यस्मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन नयं विदन्ति तत्त्वेन नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः तस्मै भगवते नमः तस्मै भगवते नमः स एष आद्यः पुरुषः स एष आद्यः पुरुषः स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजति अजः कल्पे कल्पे सृजत्यजः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मा आत्मनि आत्मना आत्मानम् आत्मात्मन्यात्मनात्मानम् आत्मात्मन्यात्मनात्मानम् संयच्छति च पाति च संयच्छति च पाति च संयच्छति च पाति च विशुद्धं केवलं ज्ञानम् विशुद्धं केवलं ज्ञानं विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यग् अवस्थितम् प्रत्यक् सम्यगवस्थितं प्रत्यक् सम्यगवस्थितं सत्यं पूर्णम् अनाद्यन्तम् सत्यं पूर्णम् अनाद्यन्तं सत्यं पूर्णम् अनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यम् अद्वयम् निर्गुणं नित्यमद्वयं निर्गुणं नित्यमद्वयम् ऋषे विदन्ति मुनयः ऋषे विदन्ति मुनयः ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्त आत्मेन्द्रियाशयाः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः प्रशान्त आत्मा इन्द्रिय आशयाः यदा तदेव असत्तर्कैः यदा तदेवासत्तर्कैः यदा तदेवासत्तर्कैः तिरोधीयेत विप्लुतम् तिरोधीयेत विप्लुतम् तिरोधीयेत विप्लुतम् आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालस्वभावः सदसन्मनश्च कालस्वभावः सदसन्मनश्च कालस्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट् स्वराट् स्थास्नु चरिष्णु भूम्नः विराट् स्वराट् स्थास्नु चरिष्णु भूम्नः विराट् स्वराट् स्थास्नु चरिष्णु भूम्नः अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च दक्षादयो ये भवदादयश्च दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वर्लोकपालाः खगलोकपालाः स्वर्लोकपालाः खगलोकपालाः स्वर्लोकपालाः खगलोकपालाः नृलोकपालाः तललोकपालाः नृलोकपालास्तललोकपालाः नृलोकपालास्तललोकपालाः गन्धर्वविद्याधरचारणेश गन्धर्वविद्याधरचारणेशा
गन्धर्वविद्याधरचारणेशा ये यक्ष रक्ष उरग नागनाथाः ये यक्षरक्षोरगनागनाथाः ये यक्षरक्षोरगनागनाथाः ये वा ऋषीणां ऋषभाः पितॄणां ये वा ऋषीणां वृषभाः पितॄणां ये वा ऋषीणां वृषभाः पितॄणां दैत्येन्द्रसिद्धेश्वर दानवेन्द्राः दैत्येन्द्रसिद्धेश्वरदानवेन्द्राः दैत्येन्द्रसिद्धेश्वरदानवेन्द्राः अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूत अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूत अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूत कूष्माण्डयादो मृगपक्षि अधीशाः कूष्माण्डयादो मृगपक्ष्यधीशाः कूष्माण्डयादो मृगपक्ष्यधीशाः यत्किञ्च लोके भगवन्महस्वत् यत्किञ्च लोके भगवन्महस्वत् यत्किञ्च लोके भगवन्महस्वत् ओजः सहस्वत् बलवत् क्षमावत् ओजःसहस्वद्बलवत् क्षमावत् ओजःसहस्वद्बलवत् क्षमावत् श्रीह्री विभूति आत्मवद् अद्भुतार्णम् श्रीह्रीविभूत्यात्मवदद्भुतार्णम् श्रीह्रीविभूत्यात्मवदद्भुतार्णम् तत्त्वं परं रूपवदस्वरूपम् तत्त्वं परं रूपवदस्वरूपम् तत्त्वं परं रूपवदस्वरूपम् प्राधान्यतो यान् ऋष आमनन्ति प्राधान्यतो यान् ऋष आमनन्ति प्राधान्यतो यान् ऋष आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषायशोषान् आपीयतां कर्णकषायशोषान् आपीयतां कर्णकषायशोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान् 22வது ஸ்லோகத்திலேருந்து 22nd ஸ்லோகாலேருந்து எல்லாரும் சேர்ந்து படிக்கலாம். யதாஸ்ய நாभ्यान्नलिनात् अहमासं महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुषावयवादृते तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशाः इदं च देवयजनं कालश्चोरुगुणान्वितः वस्तून्योषधयस्नेहा रसलोहमृदो जलं ऋचो यजूंषि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तम नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः सङ्कल्पस्तन्त्रमेव च गतयो मतयः श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणं पुरुषावयवैरेते संभारा संभृता मया इति संभृतसंभारः पुरुषावयवैरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैवायजमीश्वरं ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव अयजन् व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिताः ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुं नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायोरुगुणः सर्गादौ अगुणस्वतः सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः
विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् इति ते विहितं तात यथेदम् अनुपृच्छसि नान्यद्भगवतः किञ्चित् भाव्यं सदसदात्मकं न भारतीमेऽङ्गमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे ऋषिकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः सोऽहं समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनाम् अभिवन्दितः पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहितः तं नाद्य गच्छं यत आत्मसम्भवः नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्चिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलं यो ह्यात्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभस्वान्तम् अथापरे कुतः नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुः न वामदेवः किमुता परे सुराः तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे यस्यावतारकर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मात्मन्यात्मनात्मानं संयच्छति च पाति च विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्सम्यगवस्थितं सत्यं पूर्णम् अनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयं ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः यदा तदेवा सत्तर्कैः तिरोधीयेत विप्लुतम् आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालस्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट् स्वराट् स्थास्नु चरिष्णुभुम्नः अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वर्लोकपालाः खगलोकपाला नृलोकपालास्तललोकपालाः गन्धर्वविद्याधरचारणेशा ये यक्षरक्षोरगनागनाथाः ये वा ऋषीणां वृषभाः पितॄणां दैत्येन्द्रसिद्धेश्वरदानवेन्द्राः अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूत कूष्माण्डयादो मृगपक्ष्यधीशाः यत्किञ्च लोके भगवन्महस्वत् ओजःसहस्वत् बलवत्क्षमावत् श्रीह्रीविभूत्यात्मवद् अद्भुतार्णं तत्त्वं परं रूपवदस्वरूपं प्राधान्यतो यान् वृषा आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषायशोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान् श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सद्गुरु महाराज की जय இந்த அத்தியாயத்தை படித்த ராகம் ரேவதி நம்ம அடுத்த செஷனில் 7வது அத்தியாயம் கற்றுக்கும்போது நம்ம சந்திக்கலாம் ராதே 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 By the grace of our Guru Maharaj, we have been learning Srimad Bhagavata Mahapuranam and we have learnt till the 5th chapter of the 2nd canto. And in the 5th chapter we saw how Brahmadeva describes the Srishti Krama to Narada Maharishi. He had said how the Mahat Ahankara, the Panchabhutas, the 10 Indriyas and its Devatas had evolved and how they combined together to form the universe and from which the Virat Purusha, that is the cosmic being, had evolved. And so in this 6th chapter, Brahmadeva goes on to describe the glories of that Virat Purusha, and this chapter is said to be a translation of the Purusha Sukta, which is a very important and very famous hymn in the Vedas.
And first he begins by telling how the entire universe or everything in this universe is only a part of the Virat Purusha, just as how Shishuka had described in the first chapter of this canto. But here he gives some more details. So let us look into the meaning of this also. So he begins by telling the mouth of the Virat Purusha Bhagavan is the place for speech and Agni. The 7 dhatus, that is the 7 essential ingredients in his body, like the blood, the bone marrow, the flesh and everything, are the place for the 7 metrical forms which are used in the Vedas, like Gayatri and others. And his tongue is the place for the 3 types of food, that is Havya, Kavya and Amrita. Havya is the food of the Devas, Kavya is the food of the mains or Pitras, and Amrita, which is the remains of these 2, is the food of the humans, which is like nectar to them. And the nose of Bhagavan is the place for Ashwini Kumaras and all the herbs in this world, and also all the types of smells. And his eyes are the place for Akasha and Surya, and his ears are the place for all the directions and all the holy places. And his body is the place for the essence of everything in this world and also of all beauty. And his skin is the place of Sparsha, Vayu and all the yagas. The hairs on his body are the trees. We have already seen that. And his locks of hair are the clouds. And interestingly, he says his beard and mustache are the place for lightning. And then he says the nails on his hands and legs are the place for all the rocks and also for iron in this world. And his arms are the place for the Lokapalas, that is those who protect this world. And his strides are the abode of Bhuhu, Bhuvaha and Suvaha, the 3 major worlds. And his feet are the abode of Kshema and Sharana, he says. Kshema is the protection of whatever we have, and Sharana is the protection from all types of fear. And his feet is also the place where one can get everything that one desires for. And then his back is the place for defeat, adharma and ignorance. And all his nerves and arteries and veins are the place for all the rivers and streams. And his stomach is the place for all the oceans and also of Avyakta or Pradhana. And his mind is the place for dharma and knowledge, and also for myself, yourself, Sanat Kumara and Rudra, says Brahmadeva to Narada. And he goes on to further describe all the glories of this Virat Purusha. He says, O Narada, either myself or yourself or Rudra or all the Devas or Yakshas or Gandharvas or all the birds, animals and any being that lives on the water or earth or sky, or Bhutam Bhavyam Bhavat, that is whatever has existed in the past, whatever is existing now or whatever would exist in the future, he says Sarvam Purusha Evedam. Everything is only Bhagavan, it is all his form. And he says Tenedam Avratam Vishwam Vitastim Adhitishtati. He says this whole universe is pervaded by that cosmic being, the Virat Purusha Bhagavan. But he says this entire universe is only a small part of that Bhagavan, whereas he extends much more beyond that and is limitless, he says. And then he says, just as sun god, he illuminates himself and also this entire world. So also this Virat Purusha, he is self-illuminating as well as he illuminates the entire world both within and without, he says. And then he says, so Amritasya Abhayasya Ishaha. That is, the Lord is beyond all the fruits of all the actions which lead one to death, and he is the one who grants Amrita, that is the deathless state, and also Abhaya, which is the fearless state. And then he says, just as how we divide a shloka into 4 parts and call each part as one pada, so also if we take the 4 padas of this Virat Purusha Bhagavan, then only one pada is this place where all the human beings live, that is this world. Whereas all the other 3 parts are the higher worlds, he says, like Janaha, Tapaha and Satyam, where the Lord has placed Amritam, Kshemam and Abhayam, he says. And then he talks about 2 paths. He says, Sashana, Nashane, Ubhe. That is, the 2 paths are Sashana and Anashana. Ashana means to eat or enjoy. And Sashana is the path where one enjoys all the worldly pleasures. And it is based on avidya or ignorance. And this is the karma marga. And Anashana is to refrain from all the worldly pleasures for the sake of liberation. And this is based on vidya or knowledge. And this is called as the Upasana marga. And all people in this world follow either of these paths according to their nature, but Bhagavan is common to both these paths and he gives the fruits of both these paths, he says, and then he says, though this Virat Purusha has sprung from this cosmic egg, he is totally different from everything in this world and he stands apart, he says.
And then he talks about himself also. Now Brahma speaks about himself because Narada had asked a few questions about Brahma also. He says, I have sprung from the navel of this Virat Purusha Bhagavan, and as soon as I emerged, I wanted to propitiate that Bhagavan through yagas or sacrifice, and for that I searched for all the sacrificial materials, but wherever I turned and looked around, I could see only the parts of that Virat Purusha, because we had already said that everything in this universe is only the parts of that Bhagavan. And so what I did was, Brahmadeva says, I collected all the materials for sacrifice from the various parts of Bhagavan himself, like the Yajna Bhumi, the ghee that is needed to pour in the oblations, the trees, the dharba grass, the soma creeper, and the summit sticks, and all the Veda mantras, everything I collected only from the various parts of the Lord's body, and then I propitiated him with the yaga, he says. And following me, all the 9 Prajapatis who are your brothers, and also all the Devas, the Manus, and all the humans, later on, they also propitiated Bhagavan through yagas. And so he says, it is by his orders, that is, as ordained by him only, I create this world, and as ordained by Bhagavan only, Rudra also destroys this world, and he himself protects this world. So he says, he is called as Trishaktidrik, that is, the one who possesses the 3 powers, the Sattva, Rajas and Tamas in these forms. And so he says, O Narada, I have now told you whatever you had asked me. And now he wants to tell about his glory, that is, by whose grace he is having so much of glory. So he says a very beautiful verse which Brahmadeva alone can say. He says, Na bharati me angam rishopalakshate. He says, O dear Narada, my words never go false. Name kvachin me manasom rishagatihi. My whatever I think in my mind never goes false. Name rishikani patanti asatpate. My indriyas or sense organs never go astray in the wrong path at all. Because yanme hridautkantyavata dhrito harihi, because I always think of Lord Hari in my heart with great devotion. So that is the cause for my glory, he says. Though I am the personification of all the Vedas, though I am the personification of extreme penance, and though all the Prajapatis always prostrate unto me, but still I am unable to understand that very Lord from whom I have emerged, he says. And not only me, all the Devas, either myself or yourself or Rudra, we all keep singing the Lord's glories always, but still we are unable to understand him. And this is not a surprise, because he says even Bhagavan himself doesn't know the end of his own glories. And he gives a very beautiful example. He says, Yatha Nabaha Swantam. That is, just as the sky doesn't know its own limits, so also Bhagavan doesn't know his own glories end. That is the end of his own glories. Atha pare kutaha, he says. Then what can be said about the others? So what we can do is we can only prostrate to Bhagavan. So he says, Tasmai Bhagavate Namaha. Because it is that Lord who always destroys the samsara and bestows all auspiciousness to those who surrender unto him. And then in one very beautiful verse, he gives the nature of that supreme Brahman. He says, Vishuddham Kevalam Jnanam Pratyak Samyak Avastitam Satyam Purnam Anadyantam Nirgunam Nityam Advayam. He says that supreme truth is of the form of pure knowledge. He is the seer within the bodies of every individual. He is the truth. He is the complete person. He has no beginning or end, and he is eternal, and he is the one without a second. Advayam, he says. And then he says, who is able to realize him? He says, those who have controlled their minds and are always very calm and serene, they are able to realize Bhagavan in their hearts. Whereas those who try to analyze him with logic, Bhagavan disappears from their heart immediately, he says. And though I have told you that everything in this world is the form of the Lord, especially whatever is endowed with any speciality is the manifestation of his glory, he says, or power. He says, Bhagavat, whatever is there in this world which possesses Bhaga or the Aishwarya, Mahasvat, whatever possesses greatness or Mahatva, Ojas, Sahasvat, Balavat, wherever there is extreme physical strength or mental strength or strength of the Indriyas, Kshamavat, wherever there is extreme forbearance, Shri, Hri, Vibhuti, that is Aishwarya, bashfulness to do the wrong things, and very good fortune, Atmavat, extreme intelligence, Adbhutarnam, a splendorous form, and all this, it is all a manifestation of Bhagavan's glory. But the Jnanis and the Vedas, they only sing of Bhagavan's avatars, the Leela avatars, which he takes through Sattva Guna in order to protect this world, like the Matsya, Kurma and others.
So now Brahmadeva wishes to describe and recount all those avatars to Narada. So he says, I shall narrate to you all those avatars. He says, Karna Kashaya Shoshan. They are capable of drying up all the impurities of the earth, which is collected due to listening to all the worldly matter, and Supeshan, which are very, very beautiful and delightful. And so he says, as soon as I narrate to you, he says, Apiyatam, you can drink all that through your ears. And so in the next chapter, we will be seeing that Brahmadeva beautifully describes each and every avatara in great detail in every shloka, just as how the third chapter of the first canto lists all the avatars. Here Brahmadeva describes in detail the story of each and every avatara in every verse. And so we shall see that in the 7th chapter. So today this is the 6th chapter that we learned. So let us meet in the next session when we learn the 7th chapter. The raga in which we read this chapter today is Revati. Radhe Radhe.